सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि अभी इस वीडियो में सदगुरु ने आई थिंक मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में बात किया होगा, या फिर टॉपिक जो टाइटल है इसका लिखा हुआ है सदगुरु ऑन प्रॉफेट मोहम्मद टाइम्स नाउ में, शायद किसी न्यूज़ चैनल में उन्होंने बात किया। मुझे एक वीडियो शेयर हुआ था किसी मुस्लिम भाई के थ्रू, तो वो मैं देखने वाली हूँ। एंड लेके इस पे लिखा टाइट स्लेप टू लेफ्टिस्ट्स। तो देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। केयरफुली सुनिएगा एंड उसके बाद When we say Islam, we talk about Muhammad. Muhammad said, whole earth is a mosque for me. Can you make a more inclusive statement than that? Please let the Muslims live by that. When we say Hindus, now they're talking about Ram. Rama is that kind of man. Just out of his integrity, he gives up his kingdom. He's a coronated king, but he walks away into the forest. And his wife is stolen. Terrible things are done. But when he kills his enemy who stole his wife and did terrible things to the people, he repents having killed him. So that is the man you're fighting for, don't forget. And for the leftists, let them remember all this conniving nonsense that they're doing everywhere. Even today they're continuing like this. I want to remind them, they are not progeny of Joseph Stalin or Mao Zedong. They are supposed to represent Karl Marx, who thought of an equitable society, a society without disparities, a compassionate economy which will nurture every human being. This is what he represents. Please let all three remember this. Right now this fanning of Hindu Muslims must fight, this whole thing is unfortunately not coming from Islamic community or largely from Hindu community. There are fringe elements on both sides, I'm not saying no, but largely it is coming from left-leaning extremists. What is their interest in religion? They should not even be interested in religion, but they are always playing with this. I request all of them, please understand whom you represent. You represent Muhammad, you cannot do this. If you represent Ram, you cannot do this. If you represent Karl Marx, you cannot do this. So left-leaning extremists. Now the Prime Minister has come up with a term to describe some of them. He says that they have occupied a vast influence over the minds of this country because they are located very close to the center of power. I mean, you can call it the Latvian zone, you can call it the Khan market consensus, what have you. But do you believe these individuals have a motivated interest, or are they just ideologically driven to doing this? See, that is what I said. Their ideology is about Karl Marx. They are motivated because, unfortunately, they have understood this. When Marx envisioned communism, he thought richest nations will go for communism because he believed out of our humanity we will become communist. But right now, they have understood only if there is poverty, there will be communism. To convert people into communism, you need endemic poverty in this nation. So they are working towards that. They must be defeated because this is not good for the country. The country is striving to progress. People are striving to fulfill their aspirations. And some people, their aspiration is based in poverty as a capital. Very interesting, very eye-opening and interesting. Sadhguru, I want to ask you that inevitably in a court case there will be one winner and loser. I'm telling you, they're… Yes. No, go ahead. You were saying something. Go ahead. No, I'm telling you how far this goes means, this is not just about temple and mosque. These same people are going about campaigning. If you plant lot of trees, it's dangerous for the country. How do you… what do you say about that? Very interesting. सो फ्रेंड्स, इस वीडियो तो यहीं एंड होता है, बट मैं एक
जो कोट है, अभी एक चीज़ जो 2003 में एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, वो चीज़ मुझे याद आ रहा है, तो मैं एक कहना चाहूँगी कि इंडिया विल नॉट बी जज्ड बाय नंबर ऑफ टेम्पल, मॉस्क एंड चर्चेज, बट बाय द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ग्रेट वर्क। तो इंडिया कभी टेम्पल, मस्जिद या चर्च कितने हैं इससे नहीं जाना जाएगा, वो जाना जाएगा तो एजुकेशनल क्वालिटी क्या है, कितना सोशल डेवलपमेंट हुआ है, क्या नेचुरल रिसोर्सेज की यूज़ हो रहा है, इससे जाना जाएगा। डेफिनेटली बहुत लोग जो अगर सदगुरु को लेके लगता होगा काफ़ी अलग रिलीजन्स के लोगों को कि उनके बारे में खिलाफ बात करते हैं, तो डेफिनेटली मुझे इस वीडियो से ऐसा कुछ भी नहीं लगा वो किसी के खिलाफ बात करते हैं, वो ह्यूमैनिटी के लिए बात करते हैं। अभी जो उन्होंने बात की लेफ्टिस्ट के लिए, तो ये चीज़ सच में उनके मुँह पे तमाचा ही होगा कि ऐसा है। इन्होंने साफ साफ दिखाया भी कि अभी जो चीज़ ज़रूरत की है उनको छोड़ के ये लोगों के जो दिमाग है ना, इनके साथ खेला जाता है कहीं ना कहीं। तो वीडियो में काफ़ी साफ साफ मुद्दा दिखा कि क्या है। अगर आप प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में बात करते हैं तो आपके दिमाग में मॉस्क दिखते हैं, राम के बारे में बात करते हैं तो मंदिर दिखते हैं। बट अगर आप उनको बिलोंग करते हैं तो कभी आप किसी गलत चीज़ को, मुझे ऐसा नहीं लगता है कभी आप गलत चीज़ को सपोर्ट करोगे या फिर कुछ भी गलत करोगे। तो डेफिनेटली जो लोग ट्रू रिलीजन को भी फॉलो करते हैं तो ट्रू चीज़, जो सही काम है वही करेंगे, जो ह्यूमैनिटी के खिलाफ वो चीज़ें नहीं करेंगे। तो मेरा ओपिनियन बस यही कहता है। आप लोग का क्या ओपिनियन, आप लोग शेयर कर सकते हो इस वीडियो में कमेंट के थ्रू। सो मिलती हूँ अब अगले वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।